Okay, likewise if we click on this particular application, then we will move back to initial screen. Okay, like this. Then this is the suppose help option, is the inbuilt support option is there. Okay, if you click on this particular thing, it will provide you inbuilt support. Okay, but it's not essential right now. Okay, you will get one video over there, you can get over to this particular thing. The inbuilt support means it will let you know that what are the exact things it have. Intelligent system, likewise it's not necessary right now. Then you have this option is the open help. If you click on this open help, you can move on to the it will let you know that what are the different kinds of the application and what are the utility of those application presented on the home page. Okay, Yes, yes. then you have the notification. This is the notification application. It will let you know if you are going to create any time profile or anything. So at that particular time it will let you know what you are going to create. Okay, from here any batch job or any notification in the Facebook also we have the notification, no? Yes. So what notification is letting you know anything which is going to happen. Okay, and then you have this Right. accounts. Here actually you don't have to do anything, it is just for the sake you have to look after this particular thing. Okay, so app finder settings and all those things, and these are all the activities which has to be performed by the administrator. Okay, so Okay. right now which is the matter of interest for our right now, for us right now, it's a model configuration. Okay, so in which application model we will go? In the model configuration. Okay, so here Yes, we sir. have the basic elements like that of the attributes. By the aggregation of these attributes you are going to create a master data types. Then from master data types, first of all you will create a time profiles, then attributes, then master data types, then this particular thing you will get it in the planning area. Okay, this is the planning area. If you click on any of the planning area you will get to know how the planning area has been created. So there what are the main elements in the planning area? You have the general option here. This menu is associated with the status, last action status, normalized status. Okay, likewise if you, and the certain settings of the planning area, whether it has enabled supply planning, whether it has enabled time series or enabled the change history. Okay, or the time settings, which includes the time profile. Okay, all these thing first of all we have to predefine this thing, and then we have to make arrange here. Okay, all these things. Then you have planning horizons like this. So this is just for your understanding sake. Then in attributes you will get any data if the attributes has been associated. Here when you click on the attributes, first of all it will locate the master data type ID. Okay, and that master data associated with the any attributes it will be presented over here. And those attributes, when what is the actual description associated with that particular attribute, it will be shown here. Then if it is having certain business meaning, then it will be showing here. Then it will show the attribute category, so everything is optional or primary, it will come here. Then if it is associated with any of the planning level, so it will reflect over here. If you click here, it will show you it is associated with the one of the planning level. Okay, then the assignment status is there, it will show you it's been inactive or active. Okay, likewise. Yes, sir. Then you have the planning levels, so the combination of certain master data. So here you have the product cost and log. Okay, so product associated with the product master data, cost associated with the customer master data, and log associated with the location master data. Got it? Then Right, here sir. you have the description has been provided over here. Likewise, then it will show you how many root attributes has been present over there. So there are the two root attributes which has been present over there. Then normal attributes has been available 14. And if it is used in making any key figure, so it will show you the count over here. And if any external data source is there, if suppose any other vendor is there who has been association with your programming, if your business, so at that particular time
So if any external agency is providing you a master data, so it will be reflecting over there. Right now the status is inactive, so it will show inactive. Then you have the attribute as a key figure. So any attribute is there, like a lead time or anything I will show you afterwards. So it will be represented over here. Then key figures So are there. what is root attribute like previous Everything I will show you, everything I will show you. This is just an introduction I am going to provide you. introduction, right? Oh, this is just introduction. I just want to let you know, if you come to some new colony, so how exactly the placements of the objects were there. Okay, so that particular colony Right. we can call it as a planning area. Okay, and in अच्छा that अच्छा the अच्छा. arrangement of different kinds of the buildings blocks has been provided Hmm. over there. In that particular blocks, how many flats were available and what is the position of the flats, that I'm going to show you. Okay. Okay, okay. Okay, Got it. so then snapshot like this thing. Okay, it will be then the versions, then planning operators. Okay, likewise these particular things were there. Then we'll move again back. Now we will come to the starting point. We can come to the attributes. Okay, Yes, sir. so right now we are going to start the our initial steps of starting initial step of creating a planning area. For that particular thing we need a certain elements. Okay, so those elements are Yes, sir. the one of very basic element which is being needed in order to create any planning area, that is attributes. So we can click here downwards. So here the new attribute is here, we can click here. If I have to create any ID I have to provide, so I can provide any ID, like what's your good name, Sayan Tikano. So I am keeping Yes, sir. S PRD means product and ID. Okay, SPRD ID. Then if I want to copy this particular ID, then I can copy, but I can keep here as a product ID. Product ID. Okay, and description I can mention product ID. Now the data type, here you will have a drop down menu. So in the drop down menu you will get to know how many data types are there. 1 2 3 4. Okay, so right now we can, Yes, n bar car means n is associated with the numerical, var means variable, and chr means character. Okay, correct. right now Hmm. we are our data is been associated with the alphanumeric. We can mention alphanumeric thing also here. Okay, so we can Right. move on with this particular thing. And varchar, if your data is associated with only integer, then you can mention integer. Okay, if it is having some decimal values, okay, like exchange rate, Hmm. there we can use a Hmm. decimal. And if you are Hmm. using any time associated, any calendar or something at that particular time, you will mention timestamp. Okay, right Hmm. now we are using and varchar, and Hmm. length we are going to provide as 30. Okay, if you Yes, keep sir. it on the uppercase, then you can keep it in the uppercase, so all the data will be available only in the uppercase. Okay, if you don't Hmm. want to, if you don't wish to, if you don't wish to want to keep it as a keep it case sensitive, then you can Hmm. uncheck this particular box, and then you can Hmm. click on save. Okay, so it's showing that this particular ID is already available, so I we am Hmm. keeping as 1. So right now shall we Hmm. check? Okay, it's created. Hmm. Now we will Hmm. check whether whether we have created it or not. So we Hmm. have sprd. Yes, it's created sprd id Hmm. 01. Okay, Hmm. but it is Hmm. what is the status of this particular attribute? It's inactive. Okay, Yes, sir. so it's not getting Hmm. active right now.
then we can Hmm. move back. When it will get active, when it will get associated with any master data, then it will become Hmm. active. Okay. Hmm. Till that particular time it will shown as a inactive. Okay. Hmm. Now likewise you have to create certain IDs. Okay. I showed one thing. Okay. Now I will Hmm. provide you certain data sets in the Excel sheet. You Hmm. have to perform it. Hmm. So likewise I can Hmm. show you one thing also. Again we will go on to new. Okay, and I will create SCUST ID 01. 0. Okay, so in I can keep I'm keeping same only. Okay, Control C, Hmm. or I can keep as a S underscore CUST cust ID like this. Then customer ID. Again, this data is associated with the ANVAR car like data type Hmm. only, and I can keep Hmm. here as Hmm. a 30. Okay, so Hmm. you can click save. Just we will once again we will check whether it's been created or not. So we will move on to attributes. Then move on to home. Again the attributes. Then SUST ID. So so we have created this thing. It's Hmm. available here. Okay. Hmm. Hmm. Then what we have to create? Then again we have to create one more data as a SLOC ID 01, means location ID. Okay, Yes. so again I will give S underscore LOC underscore 01, or I can give ID. Right. Hmm. So here I can provide the description as location ID. Here also Hmm. envarchar will be there, and again here coding length I'm keeping it at 30, and Hmm. I can save it. Okay, here as LOC ID. Okay, it's available. Is Hmm. it SLOC ID? Hmm. Hmm. Okay. Yes, sir. Now it's not associated with any master data type and planning area. That's why Hmm. nothing is showing here. Okay. Hmm. Hmm. Now what we will do? Only these particular three attributes I showed you how I created. Okay. Rest I Hmm. will give you Hmm. some homework. Okay. You can perform on the system. Then Hmm. Hmm. I can provide you all the data, how you have to provide, or how you have to move on move on to that particular thing. Then we can move on to create a master data types. Okay. Here you have to move on to new. Here again you have to click. So here how many types of the master data you have? Simple, compound, reference, Simple compound external, reference. virtual. There are five Hmm. types of the master data. Okay, so we are Hmm. interested in simple master data. First of all, keep any id, keep it as sprd. Okay. ID. Next we are creating a master data type, no? So I'm keeping s product. Yes. Take. Product. Okay. Hmm. Hmm. Name also I am keeping control C, same only. If you wish to keep something, you can keep something also. Okay, description also same. Right. Then when I add here, then I will check sprd. SPRE, it's there. Okay, I can Yes, click sir. here Hmm. sprd. Then I can select. Okay, then I can click here as a key. So automatically one checkbox associated with the required, it will show on as a tick mark. Okay, Hmm. then I will Hmm. save it. Okay, so your master data has been created. Got it? So Hmm. right now, in order to check whether your master data has been properly created or not, I can move on to this check option. Okay, Hmm. Hmm.
So it's successfully checked. Now as it is already checked, I have to activate it. I can click on this activate option. Activate. Okay, it's been activation is running right now. Yes, sir. Okay, it's showing status as active, so it means it is Hmm. active. Again, once again we can refresh it. Yeah, activation is successful. Hmm. Okay, so again we can move back in master data type or from here only. So again in the model configuration we have to go model configuration. In this model configuration again we have to go on to master data. Again I have to create one more master data as a simple master data. Then here as customer. Okay, then control A, Yes, control sir. C, then control V, then control V. Again I can add here, so SUST, yeah it's there. I can click on checkbox, then I can select. I Yes, sir. can keep it as a key. Okay, then I save. Certainly. Again I have to check it whether it is properly performed or not. Okay, then I have to activate it. Hmm. Yes, so activation is also successful. Got it. Now again I have to Got it, create sir. a one more master data. So again I will move back master data type. Okay, again I will click on create. Again I will create a simple. Here I can create location, control A, control C, control C, control V. Okay, again I will create an SLC. Here we have created this particular thing. I can click on Yes, this, sir. then I select. I can click on this particular thing, then I add. Okay, then I save this thing. Again I will check, then I will activate. So the activation is successful. Okay, so let's Yes, check sir. whatever the master data we have created, whether we have created properly or not. SPRO. See here as product, it's properly created. Okay, Hmm. it's created. It's the simple. So what are the sections which has been reflecting here? ID, then name, then description, then type, then status, then at what particular time we activated, then the last action status. Okay, then attributes. Okay, then here in no master data it has been taken utilized. Okay, now we will once Hmm. again create a compound master data. Okay, and we go on to master data types. So now we will create what? Compound master data. Here as customer product. Now you get to know Hmm. what is compound master data. It's a combination of two master data. Oh, Okay, master data. yeah. So I can again keep it as a control C, control V, control V. Then I will keep on click on add. Then I will answer SPRD. Sorry, it's showing a component master data type. No,
No, it's there is no component master data type. Here we are going to add assigned attributes. Then we will keep on sprd. Yes. Okay. Hmm. Then sust clicked Hmm. select. Okay. Then here to okay. अच्छा component master data. So SPRODUCT product. So just see you have the component master data. Yes, as product is there. Click select. Then again add SUST as customer we have created simple master data. Yes, sir. Yes. Okay, it's automatically showing key and required because in those individual simple master data we have kept it as a key as a primary key and required because they these particular IDs are going to be utilized as a representative of those particular master data. Got it? For custom Got it. master So data the we can so keep the it as key and required is already ticked, so it is already activated. That's why. yes, yes, yes. Okay. Okay, then I will save it. Okay, then I will check it. Check is also successful. Then I will activate it. Hmm. Then activation is success. Okay, Hmm. it's successful. Then we will move back once again. Master data types. Again, new component I am going to create. New master data I am going to create. Compound master data. I am keeping here as location product. Product. Then I can. So what should I keep here as location? Cache. Is it there? Yes, at last. Simple master data, simple and active. Okay. Then again I have to add which one? Product. As S product. product. So now you understood how we are going to create. Yes. 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 Anything tough you find in this particular activity? Nothing, no? Oh, As product. Okay. Then we can save this video. Automatically those assigned attributes will get reflected here. I don't have to hmm. create anything or I don't have to put Hmm. anything. Okay. So Hmm. I Hmm. can, but here the status will show inactive because you are going to associate this particular thing with the new kind of the master data for that Later. particular thing. Hmm. Okay. Hmm. Otherwise in an individuality it is an active. So again we can check Hmm. it. Okay, then we activate it. Got it? Yes, sir. Activated. So now here one option is there for the copy. Hmm? Then what is the Hmm. what is the activity, what is the utility of this particular application? Shall we click on it? We can copy it. Okay, now it will, Hmm. if you want one meter, if you want this particular data is to get copied into the new master data. Okay, Hmm. you Hmm. only want to change the name of those master data because you want to Hmm. want those particular data in order to create some other thing. Okay, so Hmm. for that particular thing you need to copy already the integrated data into the new scenario or into the new Hmm. master data. So how you can Hmm. perform, you can perform it by using copy operator. Hmm. So here
it's asking you the option as a create new, merge with existing, or replace existing. Okay, Hmm. if you create new, Hmm. then you can create an exact copy of the master data type with new ID. Hmm. Okay, Hmm. so that Hmm. with new ID you can create the copy and the data will also get populated. And if you Hmm. merge with the existing, then already the master data which is having those data, it is getting merged with Hmm. those master data if it Hmm. is existing. Okay, Hmm. merge Hmm. with existing means any master Hmm. data is, if it is existing, you can merge with the merge, or you can create an add-on to that particular existing master data, or you can replace existing. If already the existing Hmm. master data is there, then you can replace already the master data which is available in the existing master data with the data from the source one. Okay, so we can create a new one. Yes. So any id we can keep, uh, I can keep it here. It's location product, no? It's a Hmm. sorry, a no, mm, p location product. Okay, like this. Anything you can keep. It's your wish. Then you can copy. Now it's showing the processing. Okay, it shows that it's been already completed. So we can move back to master data type. Hmm. Which what is the name of that new master data I have created? P product location. Anything is there? P P P P P. P location product, no? P location. Hmm. Sorry, sir. Location. Is it there? Is it created? No, it's not showing. Spelling is wrong. Location है. देखो कहीं आ रहा है क्या? हाँ, देखो आखिरी में Hmm. क्रिएट हो Hmm. गया Hmm. Hmm. कॉपी, लेकिन ये Yes. इनएक्टिव है. तो हम इसको पहले इस अब एक बार चेक कर लेते हैं. अंदर जो मटेरियल है हाँ. देखो वही डेटा है जो हमने डाला है, वही डेटा है. हाँ. ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे एक बार चेक कर लेंगे. चेक करने के लिए आपको उस चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा. चेक सक्सेसफुल हो गया, आप एक्टिवेट कर दीजिए इसे. ओके, नया बन गया. अब हम इसको अब इसमें हम फिर से कॉपी ऑप्शन में जाते हैं. ओके, अब फिर से अब हम मर्ज विथ एग्जिस्टिंग करते हैं. ठीक है, अब मर्ज विथ एग्जिस्टिंग में अब ऑप्शन आ जाएंगे. पहले ऑप्शन आ रहे थे आपके पास, नहीं आ रहे थे. अब टारगेट मास्टर डेटा हम कहाँ से कर रहे हैं? पी लोकेशन प्रोडक्ट से कर रहे हैं ना. हम इसे Yes. करते हैं फिर से एस लोकेशन प्रोडक्ट. Hmm. अरे यार मैं प्रोडक्ट की स्पेलिंग में गलत लिखता हूँ. करूँ मर्ज? हाँ. ओके, देखो ये बोला कॉपी सक्सेस हो गया. हाँ. कॉपी सक्सेस बता रहा है ये. ओके, लेकिन स्टेटस इनएक्टिव बता रहा है. ठीक हाँ. है, फिर से हम चेक करते हैं इसे. चेक सक्सेसफुल बता रहा है. अब एक्टिवेट करते हैं इसे. एक्टिवेट कर दो. अब एक्टिवेशन भी सक्सेसफुल हो गया. गॉट इट. Hmm. अब हम Got एक it. काम करते हैं, हम तीसरा तीसरा फैक्टर भी यूज़ कर लेते हैं इसमें. ठीक है, तीसरा क्या बोला? Hmm. रिप्लेस विथ एग्जिस्टिंग. तो अब टारगेट Hmm. मास्टर डेटा देखते हैं जो एग्जिस्टिंग रिप्लेस कर सकें. ठीक है, अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग
ये एस लोकेशन प्रोडक्ट है ना, अब इसको हम पी लोकेशन प्रोडक्ट में जाते हैं। एग्जिस्टिंग है वो भी। ओके। हाँ थोड़ा मैं थोड़ी सी खिचड़ी पका रहा हूँ, लेकिन समझ जाओ ये थोड़ी खिचड़ी नहीं, हाँ हाँ, समझ समझाने गया। के लिए। रिप्लेस कर दो। आ गया, फिर से बन गया, रिप्लेस हो हाँ गया। ओके। हाँ अब रिप्लेस क्या हो रहा है उसमें, कि डेटा रिप्लेस हो रहा है। ओके। हाँ जो हाँ। उस मास्टर डेटा, अभी यहाँ पे तो कोई डेटा नहीं है ना, ये तो बस आईडी है। आईडी के साथ में हम्म कुछ एसोसिएटेड वैल्यूज रहेगी जब हम कोई मास्टर डेटा क्रिएट करेंगे, जो कि रोज एंड हम्म कॉलम्स फॉर्मेट में रहेगा, जो सीएसवी फाइल में रहेगा। हम्म ओके। हम्म तो यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एक्टिवेट भी कर लेते हैं। ठीक है, हम्म ये हो गया। अभी हम वापस पीछे जाएंगे। ये सब चीज़, अब इतना तो काम हो गया हमारा। ठीक है, हम्म हमने मास्टर डेटा हम्म भी देख लिया, हमने एट्रीब्यूट्स भी देख लिया। ठीक है, अब हम टाइम प्रोफाइल हम्म देखेंगे। अब टाइम प्रोफाइल में कैसा होगा, अब हमें टाइम प्रोफाइल क्रिएट, अभी इसमें देखिए कुछ ऑप्शन है कि न्यू वगैरह ऑप्शन दे रहा है क्या। ठीक है, न्यू ऑप्शन है यहाँ पे, तो हम क्रिएट करेंगे। हम्म अब यहाँ पे सिलेक्ट टाइम प्रोफाइल्स बोल रहा है। ठीक है, हम्म अब देखिए अभी हम्म आपका बिजनेस जो भी पैटर्न का होगा उस हिसाब से आप अपनी टाइम प्रोफाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके। हम्म तो डे, टेक्निकल वीक, वीक, मंथ, क्वार्टर, ईयर, अब हमें सभी रिक्वायर्ड है तो हम सब पे क्लिक कर देते हैं। हम सब पे क्लिक क्यों कर हम्म रहे हैं, बाय चांस मेरा मूड चेंज हो जाए और मुझे मेरा बॉस कभी भी कोई दूसरा डेटा मांग ले, वो हम्म चाहता है कि वो डेली रन करना चाहता है, कोई बोल दे कि वो वीक पे रन करना चाहता है, तो हम एक काम करते हैं, हम सभी चीज़ सिलेक्ट करके रख लेते हैं ताकि हमारे पास में हम्म सब पीरियडिक बकेट्स अवेलेबल रहे। तो बेस्ड ऑन हम्म अवेलेबिलिटी या बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट कोई हमें कुछ भी पूछे तो हम उससे प्रोवाइड हम्म कर सकते हैं। अब आईडी हम क्या हम्म प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें कोई भी न्यूमेरिकल आईडी देनी पड़ती है। ठीक है, तो हम हम्म यहाँ पे हम्म देते हैं 108। ठीक है, और नेम हम हम्म प्रोवाइड करते हैं पी टाइम प्रोफाइल। ओके, हम्म कंट्रोल ए, हम्म कंट्रोल सी, ऐसे। अब यहाँ पे स्टार्ट डेट हमें शुरू करना होगा। अभी तो ये करंट, ये नवंबर 6 है आज की। ठीक है, तो अब हम्म यहाँ स्टार्ट हम्म डेट हम यहाँ से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास हमें हम्म हमें ये जो पीरियोडिक टाइम बकेट ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें कि हमारे हम्म पास में जो हमको सेल्स सिस्टम मिले। सपोज मैंने 2 साल हम्म पुरानी तो हम मैं पहले इस पर क्लिक करता हूँ। सपोज मैंने 2 साल पुरानी सेल्स हिस्ट्री, 2 साल पुरानी मतलब 2021 की। ठीक है, मंथ में कौन सा, जनवरी से ले रहा हूँ। अभी क्या, 1 जनवरी से। ओके, ये क्या हो गया, आज की तारीख से 2 साल पुराना। ठीक है, अब आज की तारीख से, ये हो गई आज की तारीख। अब हमें जो फोरकास्ट क्रिएट करना है वो आज की तारीख से 2 साल आगे करना है। तो हम्म 2023, अब क्या 25 ले लूँ मैं, 25, और हाँ सर, ले लीजिए। साल ले लो, जनवरी, जनवरी, या हम लेते हैं उसे, सॉरी, चलो ठीक है, 31 तक के, ठीक है, जनवरी तक ले लिए। अब उस हिसाब से हमारा डेटा यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, अब जो डेटा हमारा जनरेट हुआ है यहाँ पे, वो 2 साल के हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट दिया है। ठीक है, हम्म तो यहाँ पे ये 2 साल के हिसाब से दिया है 8 क्वार्टर। तो अगर 2 साल, अब मैं पहले एक के लिए समझा देता हूँ, आप दो के लिए समझ जाइएगा। ठीक है, सपोज यहाँ 1 ईयर है, तो क्वार्टर कितने होंगे, 4। एक साल में कितने महीने आते हैं, 12। 12। ओके, अभी अभी वीक्स को भी आप 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 52। कितने वीक्स होते हैं एक हम्म साल में, 52 कैलेंडर वीक, हाँ, 52। हम्म अब ये टेक्निकल वीक को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 6 30, 2 6 12, फिर 12 1 5, 65। 65 2 130 हो सकता है। 60। नहीं, 2 6 12 1, हाँ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 65।
टेक्निकल वीक्स, हाँ। ठीक है। हम्म। अब डेज बोला हम्म। है तो 365 दिन होते हैं एक साल में, हम्म। ठीक है। तो अभी इन सब चीज़ों को अपने, अभी ये रिकॉर्डिंग्स मैं आपको दूंगा, अभी इसे अपने दिमाग में गार्ड बांध लो, ठीक है। क्या है, हम्म। क्या है आपके पास में? ईयर है 1, क्वार्टर है 4, मंथ है हम्म। 12, वीक है हम्म। 52, टेक्निकल वीक है हम्म। 65, और डेज है हम्म। 365। ओके। ठीक है। अब इसमें ना अभी ये भी मैं आपको होमवर्क दूंगा। अगर मैंने यहाँ पे 2021 से 2025 कितना साल हो गया? 21, 22, चार 23, चार। 24, 25, 5 साल हो गए, हाँ। ठीक है। 5 पकड़ लो, क्योंकि यहाँ पे जो 25 है इसको चार मैं साल हो गए ना सर, 21 से दिसंबर कर लेके। देता हूँ। अब दिसंबर कर दिया तो 5 साल हो गए, हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है, हम्म। तो अब 5 साल हो गए। अब मुझे बताओ, अब मैं ईयर्स में करूँगा ना अभी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 साल रखे, सॉरी, अभी यहाँ पे मैंने क्या रखे हैं, मैंने 2 साल का रखा हुआ है डिवीजन यहाँ पे, ठीक है। अभी क्यों ऐसा हम्म। 2 क्यों रख रहा हूँ मैं? टोटल मिला के 4 साल हो रहे थे, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे हम्म। जो डिस्प्ले हॉरिजॉन इन द पास्ट बोला है, मतलब जो हम्म। हिस्टोरिकल हम्म। डेटा आने वाला है, ठीक है, जो सेल्स हिस्ट्री हम्म। हमारे पास आएगी, वो 2 साल की है। हम्म। 2 साल के हिसाब से हम्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 क्वार्टर हो गए। कितने महीने हो हम्म। जाएंगे? 24 महीने। 24 महीने। कितने वीक हो जाएंगे? 104 वीक, ठीक है। हम्म। टेक्निकल वीक कितने हो जाएंगे? 130। और 30। 365 गुना 2, 730, ठीक है। हाँ, 730। अब यहाँ पे आपने फ्यूचर के लिए भी जो बकेट रखी थी वो 2 साल की रखी थी, उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा हम्म। आ गया, ठीक है। इसका मतलब है हम्म। हमारा डेटा भी फुल्ली सेटिस्फाइड है। वी डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग एल्स राइट नाउ, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे हम्म। हम क्या कर देंगे, उसे सेव कर देंगे। अब ये बोल रहा है जो आईडी जो दिए है ना वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, तो अब हम क्या करेंगे, हम चेंज आईडी करना। चेंज कर देंगे। अब आपका फेवरेट नंबर बोल दीजिए जो भी है, नंबर बताओ कोई भी डबल टू दीजिए। एट। 22, 228। 8। 228। चलो देखते हैं ये वाला अवेलेबल है क्या, सेव करो। चलो, ये अवेलेबल नहीं है, ओके, हो गया सेव। हम्म। अब इसे भी हम क्या कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, और इसे भी हम एक बार एक्टिव कर लेंगे। ऑप्शन पूछा, हम्म। जब तक कि ये सब चीज़ें आप नहीं करोगे तब तक कि हम प्लानिंग एरिया की तरफ जाएंगे ही नहीं, ओके। ठीक है। तो अभी आज ठीक के है। लिए आपकी टास्क क्या रहेगी? आपके लिए आज की टास्क रहेगी, आपको पहले क्या बनाना है, एट्रीब्यूट, ओके। और एट्रीब्यूट। फिर उसके बाद में क्या बनाना हाँ। है, मास्टर डेटा टाइप, हाँ। ओके। हाँ। उसके बाद में हम्म। 3 ऑपरेशन हम लोगों ने परफॉर्म किए थे, जिसमें कॉपी भी करना था, मर्ज विथ एग्जिस्टिंग करना था, और रिप्लेस विथ रिप्लेसमेंट। एग्जिस्टिंग करना था, वो करना है आपको। हम्म। और उसके बाद में आपको और हम्म। एक नई टाइम प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ओके। और उसको आपको चेक भी हम्म। करना है और एक्टिवेट भी करना है, गॉट इट? कर हम्म। पाओगे? हम्म। ठीक है, ये टास्क है। मैं आपको एकदम, मैं मुझे हाँ आपको हाँ एक सर, शीट कर लो। शीट नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इसका वीडियो में प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। आप उसको देख के कर ठीक है। लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ठीक डॉक्यूमेंट है। बनाने ठीक। में मुझे ना बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। ओके। ठीक है। तो अभी आप मुझे मुझे, रिकॉर्डिंग भेज मैं दीजिएगा। रिकॉर्डिंग भेजने के लिए थोड़ा मुझे समय लगेगा, ठीक है, तो आपको वेट करना होगा, ठीक। ठीक ठीक। मैं भेजूंगा चलेगा। आपको, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। अभी ना मेरा ठीक बैक है टू सर, बैक कोई बात। सेशन है मेरे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक, चलेगा। ओके ओके कोई मैम। इशू। Okay, ma'am. So we are good to go now. Okay. For today, यस सर। this much is ठीक। enough. Yeah. यस यस। Okay, ma'am. Okay. थैंक यू सर। Okay, ma'am.